Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7 and the name of our unit is the role of government and citizens. And today I will deliver its 6th lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. Quickly tell me who is a good citizen. Very good. Now tell me what are your responsibilities as a good citizen. Yes, very good. Okay, now let's move forward. So my dear students, today again as in the previous lecture मैंने आपको बताया था कि आप इस link को follow कर सकते हैं which is given in the description box below this video and you can watch the responsibilities of a good citizen. ठीक है, आपने previous lecture में भी इसको देखा. अगर if you have missed it then watch it again ताकि आपको basic जो responsibilities हैं एक good citizen की वो आपको पता चले. ठीक है, so pause the video and if you haven't watched it, watch it again. It is again attached in the description box below this video also. Okay, now let's move forward. So the responsibilities of a good citizen are to be loyal with the country, follow the rules, should help others, must be responsible and should be fair. So these are all the responsibilities of a good citizen. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify the personal traits of good citizen like trustworthiness, respect for law, responsibility, honesty, tolerance, gender equality and respect for others' rights. So my dear students, आपके personally आपकी कैसी values होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छे citizen बन सकते हैं. आज हम उन traits के बारे में या उन qualities के बारे में बात करेंगे दोबारा. Okay. So my dear students, Allah says in Quran that, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you people and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So, my dear students, Allah Ta'ala ने हमें कबीलों की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में या communities में इसलिए पैदा किया है या हमें इसलिए कहा है कि हम इन communities में move करें. देखें कि हम इनसे कितनी चीज़ें सीखते हैं. हम इससे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हम इससे ऑनेस्ट हो जाते हैं, टॉलरेंट हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी लर्न व्हेन वी लिव विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. सो इसी तरह से इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने कम्युनिटीज़ की सूरत में पैदा किया है इस दुनिया में. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, क्विकली लिसन एंड टेल मी व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ गुड सिटीजन. वेरी गुड, यू हैव डन इट. क्विकली टेल मी. Excellent, very good. Now let's move forward towards the reading page. I request you all to please open page number 61 in your GK3 books. I hope everybody has opened page number 61. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. As a good citizen, some traits should also be adopted by every person on a personal level. Being a good citizen at an individual level not only benefits the individual itself but the whole country. When every citizen understands and adopts some good qualities, he in fact contributes to make a society healthy, peaceful and prosperous. A good citizen has following traits. So my dear students, हमारी कुछ responsibilities हैं क्योंकि हमें कुछ services जो हैं वो government की तरफ से provide की जाती हैं. वो हमारी क्या responsibilities हैं वो हमने previous lecture में पढ़ा था. अब हमारे अंदर कौन सी ऐसी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सनल लेवल पे जिससे हमें भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनको भी फायदा होगा. लेट्स लुक अबाउट एंड हैव अ लुक, रीड अबाउट दोज गुड क्वालिटीज. सो ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड एंड इज फेयर इन हिज डीलिंग. सो ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और फेयर एंड जस्ट होना चाहिए. नंबर 2, he respects law and rules. किसी भी तरह का कंट्री का लॉ हो, आपकी किसी स्कूल का लॉ हो, आपकी किसी जॉब का लॉ हो, रूल हो, उसको फॉलो करना चाहिए. इवन आपके घर के कुछ लॉज एंड रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें. He does not pollute the environment. He plants more trees to make the environment clean and healthy. So अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए ताकि उसको भी फ़ायदा हो और उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा हो. Number 4, he always respects others. He does not try to hurt anyone by his actions. So must be caring and respectful. Number 5,
He takes care and makes proper use of public property. So जो भी public property provide की जाती है उसको वो properly use करे और उसको खराब ना करे. Number 6, he tolerates the behavior of others. If someone does not like him and talk abusively, he behaves nicely to them. So टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर कि अगर उसके साथ कोई बुरी तरीके से भी बात करे या उसको एब्यूज भी करे तो वो उनके साथ नाइसली बात करे ताकि दूसरा बंदा जो है वो खुद ही जो है वो शर्मिंदा हो जाए. सो अ गुड सिटीजन की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसको टॉलरेंट और पेशेंट होना चाहिए. नंबर 7, अ गुड सिटीजन अंडरस्टैंड्स अदर्स राइट्स एंड रिस्पेक्ट देम टू. दूसरों की राइट्स को भी रिस्पेक्ट करे और उनको एक्सेप्ट भी करे. नंबर 8, he treats everyone equally regardless of their gender. और मर्द और औरत की बिना पर जो है वो किसी को भी ट्रीट ना करे बल्कि सबको, हर किसी को इक्वली जो है वो ट्रीट करे. दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन. नो वन हैज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स ड्यू टू जेंडर डिफरेंसेस. सो ये वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी उसकी जेंडर की वजह से कि वो मेल है या फीमेल है उसकी वजह से बर्तरी हासिल नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको इक्वल होना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड सिटीजन जिसकी वजह से वो अपने आप को भी फायदा पहुंचाएगा, अपने साथ के लोगों को भी और अपने कंट्री को भी. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you will do these true-false statements given on page number 64, exercise D. Okay, so what you need to do is you will read the statement carefully and then you will write T for true and F for false. So getting education is the basic right of every citizen. True. Waste are useful materials for people. False. Pakistan has a poor transportation system. False. Everyone has right to get clean and hygienic water. True. People living in one community have different nationalities. False. So this is how you will complete it in your books. I hope you have finished it. Now let's move forward towards the writing practice given on page number 65. Today you will do question number 3. How can you play a part in the welfare of the society? So अभी हमने बहुत सारे traits पढ़े हैं a good citizen के जिससे वो अपनी society के welfare को बेहतर बना सकता है और अपनी society के लिए काम कर सकता है. Must be respectful, tolerant, respect the laws, follow the rules. So this is how he can make his society a better place and can play a part in the welfare of the society. You can write it in your own words or you can take help from the book, complete it in your notebooks. I hope you have finished it. Now let's move forward towards the evaluation. So quickly answer, what steps have you taken to serve your country? क्या आपने अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कभी कोई स्टेप लिया है? If I will give you an example, I am working as an educationist. मैं लोगों को तालीम देती हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ. So this is how I am working in the betterment of my country. I am playing my part. आप लोग क्या कर रहे हैं? Being students, you must work hard to become good citizens and to play your part in the betterment of your country. अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनत से काम करेंगे तो आप अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे. Okay, my dear students, now is time to note down your homework. For homework, you will do this supervised activity. Divide the class into 3 groups. Ask each group to design a task for the local government to work in better and productive way in the following fields: health and hygiene, water availability and education. So your teacher will divide you in 3 groups और हर group को जो है वो एक topic दिया जाएगा: health and hygiene, water availability and education. And with the help of your parents, you will complete this task. So health and hygiene: promote healthy communities and healthy behavior, prevent the spread of communicable diseases, assure health services, and assure an adequate local public health infrastructure. So अगर मैं गवर्नमेंट को कोई सजेशन दूंगी तो मैं हेल्थ केयर के लिए और हाइजीन के लिए ये सजेशन दूंगी गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज water availability. Protect surface water, ground water, drinking water and water lands. पानी के जो जितने भी resources हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए गवर्नमेंट को. इसके अलावा must provide clean drinking water to everyone. Okay, last is education. So what I suggest is improved resources for teachers,
क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ होना चाहिए एंड करिकुलम बिल्डिंग होनी चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर एंड सेम एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी वैसी ही एजुकेशन होनी चाहिए जैसे कि प्रिविलेज बच्चे जो हैं वो हासिल करते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम. दीज आर अ फ्यू सजेशंस. सो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम these suggestions. So this is your homework. Now let's move forward towards the wrap up. So today we have learned that a good citizen has following traits: hardworking, respect laws, keep environment clean, respect others, take care of public property, tolerate others, and treat everyone equally. So these are the traits of a good citizen. I hope you will adopt these traits and you will become a good citizen of Pakistan. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.